हेलो गाइस, तो चालू करते हैं हम अगली प्रॉब्लम से। तो अगली प्रॉब्लम है वी हैव टू चेक द गिवन एरे इज सॉर्टेड और नॉट। सॉर्टेड और नॉट। ओके, तो चलो चालू करते हैं। तो गिवन एरे एग्जांपल देखते हैं 1 2 3 4 5। ओके, तो अपन को चेक करना है कि ये सॉर्टेड है या नहीं यूजिंग रिकर्शन। तो रिकर्शन के लिए अपन को कुछ ऐसा सोचना है कि हमको भी चेक करना है और इसको स्मॉलर प्रॉब्लम में तोड़ते रहना है। ओके, तो वन पॉसिबल सॉल्यूशन कुड थिंक ऑफ कि हम लोग क्या करेंगे। जैसे लेट मी राइट द होल एरे हियर अगेन। तो अपन क्या चेक करेंगे, तो अपन को चेक करना है कि अगला एलिमेंट इससे बड़ा है नहीं। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं कि ये दोनों एलिमेंट बड़े हैं या नहीं, यानी इफ वन इज ग्रेटर देन टू। ओके, ये हमें स्मॉलर केस देख लिया जो हमें कंडीशन चेक करनी है। फिर अपन क्या करेंगे, एक छोटा है इसका पार्ट तोड़ देंगे। ओके, तो अब अगला पार्ट क्या हो गया, दैट इज 2 3 4 5। इसमें भी अपन चेक करेंगे कि स्टार्टिंग का एरे अपना ही है मेन। इसमें देखेंगे कि जो फर्स्ट टू एलिमेंट है उनमें वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है नहीं, जो कि अपनी पहला एलिमेंट है उसका अगला एलिमेंट बड़ा है नहीं। सिमिलरली अपन इसको तोड़ देंगे, दैट इज 3 4 5। इसमें भी चेक करेंगे 3 इज ग्रेटर देन 4 और नॉट। और अगले वाले फिर तोड़ेंगे, इसमें चेक करेंगे दैट 4 and 5, तो 4 is greater than 5 or not, then we have a, we'll just break, we'll just remain with one element। तो यहाँ से अपन अपना एक बेस केस लिख सकते हैं। तो बेस केस अपन क्या ले सकते हैं, दैट इफ द एरे एलिमेंट is less than equal to 1, the size of the array element is less than equal to 1, then we will just return true। okay, तो यहाँ से अपन true return कर देंगे, फिर it will return true। बट अपन को साथ ही साथ एक कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी कि जो अपन जो साथ में लेके चल रहे थे विच इज दिस वन, कि जो एरे का जीरो सब में जीरो एलिमेंट अपन चेक करें पहले। तो जीरो एलिमेंट जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू एरे ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एरे। ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन वी कुड से इट्स सॉर्टेड। दिस वन प्लस this is the main condition, and we would just call the whole function all over again। तो अपना बेस केस क्या हो जाएगा, जब n is less than equal to 1 then we will return true। और अपन दो कंडीशन चेक करेंगे, जो रिकर्सिव केस है उसमें अपन दो कंडीशन चेक करेंगे। वन सी, ये तो भी अपना बेस केस। रिकर्सिव कंडीशन में अपन क्या क्या चेक कर रहे हैं, एक तो एरे ऑफ 0 is less than array of 1, एंड अपन ये भी देखेंगे कि अगला वाला जो है वो जो आ रहा है वो सही आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसको एंड के साथ सेम फंक्शन खोल कर आ देंगे। तो द एफ ऑफ, बट दिस टाइम वी विल जस्ट गो थ्रू द अनदर एरे दैट इज वन लेस देन द साइज। तो अपन क्या करेंगे, जो बेस एड्रेस होगा उसमें +1 कर देंगे, साइज को एक डिक्रीज कर देंगे। सो this will keep calling the array all over again like a recursive case। This is the recursive main part। तो फंक्शन को इंटरनली कॉल करता रहेगा। once the last element is hit, it will return true as we our base condition will get hit। It will return true, it will check for the zeroth and last element, if both are true as it have returned true, it will return true। It will be come here, this true, this is true, end of this will be true, this true, this true, end of it will be true। And if any one element, like if it is 3 and it is 2, what will happen, this condition will get false, and if this get false, false and true, then we are just using end of it, it will return false। okay, so if that returns false, we'll ultimately get the result of the function as false। okay, so this is how it will be done। तो इसको कोडिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वहाँ से बेटर समझ में आएगा। तो लेट्स
kill, create new file, we call it as array sorted. Okay, अब सबसे पहले अपन एक array बनाते हैं. तो the first array will be, let's create a array. तो अपन एक array बनाते हैं, इसमें अपन वैल्यू देते हैं 1 2 3 4 6. तो अपन एक array बना दिया. अब इसमें अपन पहले इसकी साइज निकालते हैं, बिकॉज वी हैव टू डिक्रीज द साइज इन द रिकर्सिव फंक्शन. तो अपन एक साइज वेरिएबल देते हैं, इसमें size of the array and we'll just divide it with the size of int. ठीक है, और फिर अपन चेक करेंगे कि जो अपन एक फंक्शन बनाएंगे that is just check sorted, we'll pass the array and the size. If that is written in true, then we'll just output the value that it is sorted. And if it is not written in true, then we'll just output that it is not sorted. Okay, there it is. Now let's create that function. Well, return bool value, so it's a boolean function. Let's name it check sorted. Let's just create an array and just write the size as n. I'll first check the base, write the base condition, which is n equal to 0 or n equal to 1. Then we will return true. Okay, or then we will write our recursive condition, that is nothing but we'll check array of 0th element is less than array of first element, and because we have to check that the remaining array also returning true. So we'll just call the same function and we'll pass that the array plus 1 and in the next index, and we'll decrease the size by 1. And if both are true, then we will return true. If that's not the case, then we will just return false. Let's run it. Okay, it is returning true, that is sorted. Okay, just change one parameter, we just say right 8. Now it should return like it should print not sorted. Okay, it is printing correctly. Now let's understand how it is actually working. So what will happen first? So let's check. Okay, so as you can see, we'll first the main function will call check sorted. The check sorted will have this array. This array is nothing but 1 2 3 8 5 7. Okay, तो अपन ये function को call किया. We'll check for the base condition as array is this one and that is size is 1 2 3 4 5 6. Size is 6. So this will not hit, the base case won't get hit, and we will check for this function, that array of 0 and 1. Let me write the index
So index of 0 is 1, that is 1 is less than 2. So this condition is true. Okay, and it will call the same function again, but this time it will array plus 1, that means it will call from the next index. This is the base address, that is called starting address. So this is starting address which is pointing to 1, and we just increase it by 1. So this time array is from here, and we just decrease the size from 6 to 5. So this time the array will call on 2, 3, 8, 5, 7. Okay. So in this also we'll check the base condition. It is not hitting. We'll check the array 0 and 1. That is nothing but 2 and 3. It is true. Again we call on the same thing. Decrease the array by increase the array point to the next element and decrease the size from 5 to 4. This time we have 3, 8, 5, 7. Check for 3 and 8, that is true. We'll call it for 8, 5, 7. Decrease the case by 3. This also we check. We call on the next two, 5 and 7. This time we are not just checking right now, because it is keep on going inside and inside until it hit the base case. Okay, this time we call on 5 and 7. Okay, we'll check 5 is less than 7. Okay, and then we call the 7. So as we keep doing that, the size will comes to 1, and when it comes to 1, the size comes to 1, and it will hit the base case and it will return 2. So it is returning this 2 true. Okay, it is returning true, and as we have created it as AND, so both these are AND. This is also returning true because this is true. Both of the AND will come to here. From here we also check the same function. तो functionality यहाँ रुकी हुई थी, check करें यहाँ से 0 and 1. At this time we can see it is false, and it is returning true and true, which is 2. So false and true, this time it will return false. So it is returning false, it is true, but the end of both of those is nothing but false. This is true, but end of both of these is false. So it will never goes inside, so it will never return true. That's why it is returning false, because we have done false. It will come here, it will check, it will return false, it will check, it is true, but the end of both of these is false. So this will ultimately return false. And we can see in the main function, we have just written it this way. If it returns true, then it is printing sorted, otherwise not sorted. So it will print not sorted. This is how it is done. So that's all for this video. Thank you guys.